everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the various documents prepared by an FI consultant in SAP. My name is Nikita Baheti. I am a certified SAP FI consultant. So let's get started. So the very first document which is prepared by an SAP FI when he or she is into any project is as is document. आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा what do we mean by as is document. As is document means the current status or the current system and the operations of any organization, the current business operation of any organization. किसी भी organization में जो उनके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है किस तरीके से वो वर्क करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, या उनके सिस्टम में जो भी ओल्ड ईआरपी है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो उसका एक डिटेल जो डॉक्यूमेंट हम ब्रीफ करते हैं ना, जो मेंटेन करते हैं ना, उसे हम कहते हैं एज इज डॉक्यूमेंट. As is document states the current status of business operation of any organization, the existing operation. Yeah. And then it is to be document. To be document means what an organization is expecting the changes to be made into their organization in their business processes or operations. वो क्या expect कर रहे हैं? आज जब SAP install हम करेंगे तो what they are expecting from this new ERP, कि क्या changes उनको चाहिए, किस तरीके से SAP ERP उनके सिस्टम में वर्क करना चाहिए जो उनके एग्जिस्टिंग ईआरपी में नहीं हो रहा हो, या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ईआरपी है ही नहीं. They are completely into a fresh installation, as I told, like greenfield implementation, right? So अगर कोई existing नहीं है but उनको ये है कि अगर वो मैनुअली भी कर रहे हैं आजकल, तो उनको अगर अब सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, सिस्टम में चाहिए, तो वो किस तरीके से चाहते हैं कि उनका ऑपरेशन वर्क करे उनके ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो वो चीज को हम जो डॉक्यूमेंट करते हैं ना, वी कॉल इट एज टू बी document. Then the next is BPC. It is BPC stands for Business Process Catalog, or we can say Business Process Document. Anything, yeah? So इसमें क्या होता है ना, हम दोनों चीजें मेंशन करते हैं और दोनों चीज को एलैबोरेटली समझते हैं. एंड बहुत टेक्निकली हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे. तो उनको एक लिस्टिकल फॉर्म में मेंशन करना, कैटलॉग के जरिए मेंशन करना कि एक प्रॉपर हमारे पास एक कैटलॉग है वेयर वी कैन हैव बोथ द साइड की एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑपरेशंस दे आर एक्सपेक्टिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है एंड it makes our work easy, in future, in down the line, कि हम किस तरीके से चीजों को अब प्रोसेस करें. So this is business process catalog. Now let me explain you these three documents by giving a very common and simple example so that it become more clear and आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्या है, मतलब इनके रिस्पेक्टिव क्या फंक्शंस है. ठीक है, so see here, what is as-is document? The purpose of as-is document is it capture the current state of business process. I told you, like कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन क्या है वो चीज हमें एज इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है एंड वो हमें बनाना भी होता है, राइट. टू बी डॉक्यूमेंट ये है कि जो वो डिजायर करते हैं कि फ्यूचर में क्या स्टेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनको चाहिए. ठीक है, एंड एज आई सेड बिजनेस प्रोसेस कैटलॉग और बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट, it provides a comprehensive view of business process covering both the aspect. What are those aspects? As is document and to be document, right? So
Here, the scope of as document is confined to current state only, क्योंकि हम सिर्फ existing पे ध्यान कर देते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। whereas टू बी डॉक्यूमेंट का जो फोकस या स्कोप है वो फ्यूचर है, ठीक है। एंड बीडीसी में सिंस हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक डिटेल में ओवरव्यू लेते हैं इस चीज का, तो इसमें करेंट एंड फ्यूचर बोथ इंक्लूड किया जाता है। नाउ गिव मी एन एग्जांपल, से एक कस्टमर है, उसको गुड्स चाहिए, उसने ईमेल ही मेल्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ हिज ऑर्डर, है ना। एंड जिनको हमने मेल किया, द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ही गॉट द मेल and he got the order through a mail. Now what he will do? He will manually enter all those order. He will print the order and send it to the warehouse. warehouse में जब order पहुंच गया तो warehouse के जो लोग हैं, जो जो who are the concerned person, they will, what they will do, they will pick the order, they will pack it and they will send it to the shipping address. अब क्या होगा, जब ये शिपिंग एड्रेस में पहुंच जाएगा तो हम ये चीज के बारे में भी, तो इनवॉइस भी जनरेट किया जाएगा, इनवॉइस का भी प्रिंट आउट होगा। सो ऑल दिस आर डन मैनुअली, है ना। मैनुअली द शिपिंग एड्रेस इज अपडेटेड कि हमें किसको भेजना है, एंड फाइनली विथ after sending the goods, we also manually invoice भी हमने print किया and we have sent it to the concerned person, or it's even we can send it through the email. But क्या है, इसमें बहुत stages में manually हमें करना पड़ा। email आ गया but system में update automatically नहीं हुआ। what we did, we have to manually enter the order, right? And then we have to manually update the shipping address of the customer. We have to manually, what we have to update the invoice, we and then we have to generate the invoice and then we can take the printout. So इसमें क्या है ना, manually हमें मतलब मैन को खुद बहुत जगह फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ा है, राइट। बट अगर यही चीज, अगर हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ले आए जो बहुत चीजें को स्ट्रीमलाइन कर दे, मतलब कि मेल के थ्रू अगर ऑर्डर जा रहा है तो ऑनलाइन ही वो ऑर्डर अपडेट हो जाए, जहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको ऑर्डर मिल जाए वहीं पे। जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, देयर इज अ वे वेयर द वेयरहाउस टीम गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर एंड वेयरहाउस टीम डू द जो भी ऑर्डर का जो ब्रीफ है उसके अकॉर्डिंग वो पैकिंग करते हैं। फर्स्ट पिक दियर प्रोडक्ट, देन दे पैक एंड देन दे शिप इट टू द एड्रेस। वो गुड्स तो शिपिंग होगा ही, वो तो फिजिकली ही जाना है, राइट। गुड्स तो डेफिनेटली वी हैव टू, लाइक इट्स अ टेंजिबल थिंग, वी इट हैज टू गो लाइक फिजिकली। बट जो हम इनवॉइस अब जनरेट करना होता था पहले हमें मैनुअली, इनवॉइस या तो हो सकता है कि हम मैनुअली भिजवाए पहले, ऐसे सिचुएशंस भी आ जाए। बट अब क्या हो रहा है, जैसे ही शिपिंग एड्रेस गुड्स तैयार है, ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जा रहा है ना। ऑटोमेटिकली शिपिंग एड्रेस जहाँ पे जाना है वो उनको नोटिफिकेशन मिल गया है कि यहाँ वेयर हाउस से गुड्स डिलीवर्ड हो चुका है। एंड फाइनली आफ्टर द गुड्स बीइंग डिलीवर्ड, इनवॉइस ऑटोमेटिकली जनरेट किया हो रहा है एंड इनवॉइस ऑटोमेटिकली हैज रीच टू द कस्टमर एंड वेयर ही कैन automatic either online, even it can be done payment, but generally online ही preferable होता है and the payment is made online, right? So आज अगर हम normal भी example ले, what we do, we order a good in Amazon, right? So everything is done online. ऐसा तो नहीं है ना हम कॉल करके बोलते हैं कि सुनिए हमें ये चीज चाहिए, आप हमें ये भिजवा दीजिए इस एड्रेस में। नो, when we do any online shopping, there is everything where we have to give our detail entire thing, and then we can place our order where they get the notification and how they the warehouse team they pack our stuff and then they send it to our shipping address, where automatically either we make the online payment, and generally we prefer to make the online payment, right? How all the bank details are linked with Amazon or any other app through which we are ordering the product, right? So मेरा ये है कि एज इसमें मैनुअली जब कोई ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं
जब वो टू बी तक चाहते हैं ना, जो उनका फ्यूचर रहता है ना, दे एक्सपेक्ट कि सब कुछ बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाए, स्मूथ हो जाए, सीमलेस हो जाए, एंड दैट कुड ओनली बी पॉसिबल इफ मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑनलाइन। या सो इसमें भी मैंने इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने को समझाने की कोशिश की है कि से एज इस डॉक्यूमेंट में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिसीव ऑर्डर थ्रू एन ईमेल, then what he does, he manually he enter the order, he take the printout of the order and send it to the warehouse, है ना? He send those order to the warehouse. Now the warehouse, what they do, those department, the team pick the stuff, he or she or the team, they pack the stuff and ship the item. Manually, they update the shipping information and generate and send the invoices. And say most is entire operations में there is lots of manual work, but whereas what they are expecting from SAP ERP, they are expecting कि customer place order through online portal, order details automatically capture हो जाए SAP में, electronically order ऑटोमेटिकली वेयरहाउस तक पहुंच जाए कि ये ऑर्डर पर्टिकुलर कस्टमर का है, वेयर हाउस तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि ये ऑर्डर आया है। वेयर हाउस में जो भी टीम है, दे विल पिक पैक एंड डू द शिपिंग आइटम्स जो भी है, दे विल डू द पैकेजिंग एंड सेंड इट टू द एड्रेस ऑफ द कस्टमर, एंड द शिपिंग इंफॉर्मेशन इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द एसएपी, कि एसएपी में अपडेटेड हो गया कि हमने इस कस्टमर्स को हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, मतलब deliver, we can't say deliver, it is dispatch कर दिया है, right? Even when we order something in any app, say Myntra or Amazon, हमें क्या दिखाया जाता है, that we get the informations of everything, right? कि आपका order हमें receive हो गया, now the goods has been shipped, right? We get such information, or the dispatch, your goods has been dispatched, now delivery, now even we get the delivery time कि within 24 to 48 hours you are expected to get your goods or your delivery. So how it is work, how we are getting every information just with a click. How? Because everything is connected, connected to each other, and सब कुछ सिस्टम से इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि एक चीज हो रहा है, दूसरे को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दूसरा अपडेट हो रहा है, थर्ड चीज में इंफॉर्मेशन आ रहा है, थर्ड चीज अपडेट हो रहा है, फोर्थ चीज they are passing the information to the fourth system, and how everything is like interlinked, and how everything by sitting just on your table and the system you can get the entire information that what is the status of the of your any product which you have ordered. So to be document में यही चीज है कि they update the SAP and invoice automatically and generate, and then finally they get the mail of their invoice, जो भी invoice है, instead they get their soft copy, right? And same business प्रोसेस डॉक्यूमेंट में ये दोनों इश्यूज को हम आइडेंटिफाई करते इलेबोरेटली, ठीक है? ये एजिस में क्या हो रहा था एंड टू बी में क्या हो रहा था। अब क्या हो रहा है ना, जब कुछ चीजें मैनुअली होती है ना, तो टाइम भी लगता है, एंड सी मैन पावर रिसोर्सेस सब कुछ बहुत ज्यादा लगता है। जहां पहले आप खुद सोच लो कि एवरेज टाइम 2 डे लगता था, से इट वाज जस्ट एन एवरेज टाइम, वही जब कोई चीज ऑनलाइन हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, तो वो 1 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, राइट? नाउ सी देयर इज अ बिग गैप बिटवीन 2 days एंड 1 hour। तो इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट कटिंग भी हो रहा है, हम एफिशिएंटली मैन पावर को यूज भी कर पा रहे हैं, हम और सिस्टमेटिकली वर्क कर पा रहे हैं, राइट? जो हम एक ऑर्डर में 2 दिन लगा रहे थे, अब वो 1 घंटे में सब कुछ हो रहा है, तो हम डेफिनेटली हम वर्क भी तो ज्यादा कर रहे हैं। अब 2 दिन में हम एक ऑर्डर वैसे बहुत सारे ऑर्डर हो गए, बट हम एक ऑर्डर के लिए अब हमें 2 दिन के लिए 2 दिन तक उस चीज पे लगना नहीं होता है, हम 1 घंटे में ही कर सकते हैं अगर कोई चीज हमारा बहुत ऑनलाइन हो चुका हो तो।
करें तो हम ज्यादा क्वांटिटी में अब काम कर सकते हैं, क्वालिटेटिव काम कर सकते हैं, एंड कॉस्ट कटिंग भी रहता है। हम मनी को और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं इन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। जितना टाइम हम इसमें लगा रहे हैं, हम उतने टाइम में और प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट, और अपना टीम को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है when in while mentioning in ASIS and to be documents. So this is the differences which we mentioned in ASIS document and to be document, ठीक है। And definitely when something is very manual, तो उसमें error होने के chances भी बहुत ज्यादा होते हैं। That doesn't mean कि online में error नहीं हो सकता, definitely हो सकता है, but the chances are very less, right? Because सब कुछ, अब ये चीज है कि अगर हमने इनपुट ही गलत डाला है, स्टार्टिंग से ही हम गलत, सपोज हम हमसे कस्टमर ने 6 ऑर्डर मांगा, ही आस्क्ड फॉर 4 आइटम्स एंड वी हैव एडेड इन द सिस्टम 3 आइटम्स। तो जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, इट इज एज पर द 3 आइटम्स। इफ द इनपुट वी हैव डन, मतलब इनपुट ही हमने गलत डाला है, तो डेफिनेटली देयर कैन बी सम एरर इन दैट केस, बट ऐसा बहुत रेयर केस होता है। बिकॉज जैसे अगर कस्टमर ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनके सिस्टम में भी तो मेंटेन हो रहा होगा ना, दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग ऑन देयर पार्ट। सो देयर इज इवन क्रॉस चेक इज बीन डन। सो इन केस इफ दे कम अक्रॉस सच थिंग्स दैट 4 के बजाय हमने 3 आइटम का ही ऑर्डर लिया है, then there is a way where they can communicate us कि आपने गलत किया है, where we have ordered 4 items, this is our order, the purchase order, and this is our purchase order and you have to deliver the goods according to it, or this is our sales order and we have to deliver the goods as per the given sales order, right? So वो जब ऑनलाइन काफी एरर, ह्यूमन एरर को कम कर देता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एसिस, द ह्यूमन एरर definitely comes into picture because everything are maintained manually, right? So this is, and what do you mean by KPI? KPI is stands for key performance indicator. It, हर ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे यूजेस दिस इंडिकेटर टू इवेल्युएट कि उनके जो टारगेट है ना, उस टारगेट को रीच करने के लिए उन वो कितना सक्सेस कर रहे हैं। ओके, सो इट्स अ पैरामीटर। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि आपको कुछ अचीव करना है एंड उसको अचीव करने के लिए यू मेक योर प्लान्स, राइट? सो आपको कहीं तो कुछ तो आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा ना अपने लिए, कि आप किस तरीके से इवेल्युएट कर पाओ कि आप कितना गोल के करीब हो। तो लाइक वाइज एक ऑर्गेनाइजेशन यूज सच इंडिकेटर which is key performance indicator in order to evaluate their success while reaching their targets. So this is about as is to be and business process document. Now, the next is what? The next is business blueprint. Yeah. आप लोग को मैंने इवन पहले भी बताया था, when I was explaining you the various types of implement SAP projects. So the first was implementation project, second was rollout project. Yes, and while explaining you the phases of implementation project, the SAP projects were implementation, rollout, upgrade and support project. बट मैंने ये भी बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट है वो 5 फेजेस में डिवाइडेड है। Sorry, the first was project preparation and the second is business blueprint. And business blueprint क्या होता है? business blueprint मैंने बताया था कि जब हम एक आइडिया लेते हैं, कंप्लीट डिटेल आइडिया लेते हैं अपने क्लाइंट से कि उनको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उनका एसएपी उनके सिस्टम में कैसा वर्क करना चाहिए। सो आई विल नॉट गेट इनटू सो मच डिटेल बिकॉज वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। So this is what, so we have to prepare. Like who prepares the business blueprint? The consultant team prepares the business blueprint. So blueprint is a document prepared based on the requirement gathered from the clients. In this phase, consultant will have discussion with their respective core team member who is core team member. जैसे मैंने बताया था, they are the counterpart of the consultant
team, right? From the client side, if अगर हमारे यहाँ कंसल्टेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर है तो क्लाइंट साइड में उसी डेजिग्नेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर को हम को टीम मेंबर बोलते हैं. सो इन दिस स्पेस कंसल्टेंट विल हैव डिस्कशन विद देयर रिस्पेक्टिव को टीम मेंबर regarding their business process and will record the entire requirement in a document which is called blueprint document. Got it? So, uh, yeah, this was about business blueprint. One more thing I have to tell you that कि जरूरी नहीं है कि every ERP implementation are successful. It's not necessary. See, it all depends. Various factors are dependent, starting from कि money, how well the team has understood their requirement, like the client's requirement, the consultant team, इवन द क्लाइंट साइड जो हमें अपना रिक्वायरमेंट बता रहे हैं वो खुद कितने क्लियर है कि उनको क्या चीज किस तरीके से चाहिए. एंड इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि जो वो डिमांड कर रहे हो, डेफिनेटली इट्स नॉट कि वी विल से कि वी कांट डू इट, वी विल ट्राई, बट वी डू नॉट नो whether it will be successful or not, right? Agar standard cheese hai, we are assured about it. But if something where customization is required and they are okay to pay extra cost for it and they have given a sufficient time for it, even after that, we are not sure whether it will be implemented or whether it will be worked properly or not. So, and there are many various other, even it depends upon the situation, you know, the outside scenario, whether the timeline, उन्होंने अगर कोई ऐसा implementation है जो बहुत कम time हमें दिया गया है because of some factors which is coming in picture. So there are many factors through which a project, an implementation project can fail. It's not necessary कि सब कुछ अगर हमें पता हो, सब कुछ हम कर भी ले, still the implementation project worked out. No, it's not necessary. So there are few examples जहाँ पे we can say that ERP implementation was not a success uh, story for them. It was done, but after like covering too much of like involvement of other teams or too much of time duration, चीजें हुई, no doubt, चीजें complete हुई after various trial and error. But agar on the first thing when the SAP goes live and if it is not working properly, if the team or the client team is facing too much of glitches while working, too much of error while working, then definitely something is wrong internally and externally, right? So internally can बहुत सारे reasons हो सकते हैं कि टीम में क्लैरिटी नहीं था, टीम में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स क्या है, there were lack into that. Even sometimes there be inadequate change management. The client keeps on demanding for some changes, and which becomes very like inadequate to adopt to that changes. So very important thing is that there should be a proper communications between the consultant and the client, and after the proper like conversation, it should be signed, the blueprint should be signed, so it is a final and green signal that now the consultant team can start their testing and configurations and testings both. Sometimes, so because of poor project management, SAP are not implemented successfully, but not only we
it's 100% because of some internal issue, sometimes even various market factors, market conditions, economic conditions, the technology changes and updates due to some government rules, regulations, compliances, things doesn't work out. So to give you a few example where things didn't work according to what they expected is like a leading example was like of Hershey. We have we know this brand, right? We generally it's popular with the chocolate syrup. If I am very much sure that most of are aware of this brand. तो जब इन्होंने भी क्या किया था ना ERP जब implement किया था ना it was failure for them क्योंकि what they did they wanted to implement ERP ठीक है and also ERP through what? Through SAP. एक तो they wanted SAP ERP. So, and also to there is a software which is known as Sibyl system. Yeah, Sibyl system. What is this? It is mainly like as I said कि SAP ERP क्या होता है? 4 M's को effectively and efficiently use करने में help करते हैं ठीक है what are those manpower money material and machinery civil system क्या करता था customer relations को build करने में it was used for managing the customer relationship ठीक है CRM so it was a software which were specialized in CRM and one was Manugistic Manugistics. So it was mainly it was also a software which was specialized in supply chain management. So Hershey's ने क्या what they aimed of implementing this ERP, SAP, Siebel system and Manugistic. अब हुआ क्या ना उन्होंने बहुत टाइट टाइमलाइन रखा but doing this much of thing and that too they have kept the timeline of 30 months only because they do not want to disrupt between the Halloween party, Thanksgiving, Christmas peak and all. है ना? तो USA में this all are the festivals which are celebrated. So they do not want it to disrupt it by this. So they targeted a very uh, tough timeline or you can say very strict timeline which was just of 30 months ठीक है अब क्या हुआ ना उनका सिस्टम obvious है now when you have given this timeline things have to work this way है ना अब वो कितना इफेक्टिवली उनका कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उन लोग कितना टेस्टिंग कर पा रहे हैं बिकॉज जस्ट यू हैव गिवन ए डेडलाइन ऑफ 30 months they are also like कि the Hershey's client जो the team they are also like they have to go live so somehow they have completed their implementation they went live with some testings were done some were not done so because of all those inadequate testing they faced so many glitches they इतने उनको technical issues हुए once the system went live and इतने data mismatch arose हुए इतने सारे उनको problems हुए ना yet finally they couldn't work properly मतलब उन्होंने पैसा भी लगाया they waited for such for so long but because इतना कुछ करना था and time constraint इतना था ना so because of this the new system was not correctly fitted to the current business process and due to this there were several problems while making things because it was not done properly the testings were not done properly ठीक है and also ये तो था ही plus it because of all this they have faced an estimated losses of $100 million imagine इनको इतने का लॉस हुआ था and when they faced लॉस तो हुआ था and obvious है when things doesn't work properly such a good company इनके शेयर के स्टॉक प्राइस भी significantly उस वक्त गिर गए थे so this is one of the example which where the ERP implementation was a failure. And even if we talk of Indian companies, it's not like कि Indian companies में failure नहीं हुए हैं. Definitely, even
Indian companies maybe, if you take, there was an SAP implementation for Air India, which was in the year 2011. And also, their main objective was to streamline the finance sector, the HR sector and the procurement sector. ठीक है, इनका ये मेन फोकस था, MM का था, FI का था एंड द HR कंसल्टेंट का रोल था. ठीक है, अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, है ना, and not because there was no proper detailed planning and insufficient employees, like the training were not, it's not about insufficient employees, it's about कि कोई भी नए सिस्टम के लिए हमें employees को proper train करना बहुत जरूरी है, because they are not used to the new system. ठीक है, तो what was done कि employee were not adequately trained to use this new system, which led to in resistancy and operational issues. Various operational issues were there, है ना, बहुत सारे issues and challenges they started facing. Even they had some legacy system. They were working something like on old ERP. So at the time of migrating the data, they faced severe and significant challenges. And because of all these delays and inaccuracies, they एक बार तो क्या हुआ ना, ये इम्प्लीमेंटेशन वॉज ए बिग फेलियर, लेकिन फिर क्या हुआ, डेफिनेटली अब आपने इतना कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया, यू कांट लेट गो इट. सो फिर क्या हुआ, अगेन दे टुक दिस इनिशिएटिव, they were working on it. Finally, what happened in 2019, it was a failure, but in 2019 what happened, they partnered with IBM in 2019, and then they further integrated it, they tried to improve their ERP system, and finally things worked out later after various involvement, their engagement with brainstorming and doing too much of like training and detailed planning, they finally were able to work efficiently and उनका फिर एक proper operational they achieved in enhancing their operational efficiently, and there was a proper like working system on their organization. So they, after like see, in 2011 it was a big failure, but after when they partnered it with IBM in 2019, they finally got succeeded. They helped in for integrating and improving their ERP system. And similarly in Tata Steel, we can say in Tata Steel also, like in 2010, they have planned for ERP implementation, which was like earlier it was failure, but then again with various like facing severe delay and cost, they kept working on it. They keep taking the help of the consultant team. If they were not happy, they partnered it with some other team, and finally they were successful in implementing the SAP ERP. So that's what I meant to say कि it's not it's so easy कि आप आपके जो as is है और to be है और हमने oldest down कर दिया, blueprint बना दिया, and once we start with it, everything is like successful. No, it's not necessary. Sometimes because of there are various other factor, internal, external, which does affect the SAP ERP implementations of not getting successfully implemented. So this is, there are even various other topics which I have to cover. There are many other documents which I will be covering in later classes. So this is all about today's class. Thank you and have a nice day.